Museums have for long years been places where outsiders have represented indigenous communities. We, as outsiders, had decided what to say about these communities or how to display what represented best their culture, community, and material objects. In other words, we had decided to tell their stories not in their voices but ours. It is time to change that and allow their stories to be told by them. This film is about our search for those voices. The Antri Museum proposes not to be a museum about the indigenous communities of the Andaman and Nicobar Islands, but by them. It aims to be not a museum that houses mute objects, but a place that houses memories, desires, and aspirations. It hopes to be a place through which the Andamanis and the Nicobaris would like to tell stories about themselves to their children and to the world at large. These would be biographies of places they live in and the objects they value. To reconstruct these object biographies and the meanings they embody, Antri's curatorial team spoke to some members of the Nicobarese community, some of whom had traveled to foreign lands and seen their objects displayed in glass cabinets. Many of these were collections of wooden carvings known as hantakoi and kareyu. Although much appreciated for their aesthetic qualities, very few know that the hantakoi are testimony to the feelings generations of Nicobaris have expressed to the many phases of foreign presence on their islands. Rashid from the Nankauri Islands of Nicobar is among the few who have traveled widely in Europe. This is what he feels about the museums in the West and the much prized Handakoi. तो बाहर का म्यूज़ियम में जहाँ तक हम देखा उन लोग बहुत अच्छे से डाला, फुल एसी है, आरसीसी स्ट्रक्चर है और अच्छे से टाइल्स डाला हुआ है और हम लोग का जो हैंडीक्राफ्ट है सब अच्छे से डिस्प्ले किया है, बस और कुछ उससे ज़्यादा हम ये नहीं। इधर में हम वही डालेगा जो जो मेरा पास है। हाँ, तो वो आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, द वॉइस होना चाहिए। हाँ हाँ। एक एक होता है वहाँ हिंताई कोई करके, तो हिंताई कोई का जो है हर एक आदमी को होता वहाँ। अभी समझ लो कि और एक्टिव होना चाहता लाइफ में और भी हमको एनर्जी चाहिए लाइफ में जो है, तो फुल मून नाइट में जो है ये सेलिब्रेशन होता है और ये हिंताई कोई को उन लोग जो है पूरा डेकोरेट कर देते हैं ताकि हम लोग को स्पिरिट जो है उसको और एक्टिव करें, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग स्पिरिट है जो जो दिखाई नहीं देता है, तो वो स्पिरिट को जो है वो चीज़ का ज़रूरत होता बोलते। तो अगर ये ट्रीटमेंट होता तो उसमें जो है हम पूरा दुनिया के साथ जो है बहुत एक्टिव रहेगा, एनर्जी बहुत मिलेगा हमको, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो समझ को कभी भी ख़त्म होने नहीं देना, मेरा ये है मानना, ये है। इसलिए हम चाहता कि हर एक चीज़ जो है ये म्यूज़ियम में आना चाहिए, जिसमें हमारे जो यंग जनरेशन लोग भी उन लोग भी खुश हों इसके बारे में समझ के। Antri's museum's collection will be based on the continuous documentation of such object biographies that the curatorial team gathers from each community. These narratives, that are often about loss and longing, of land and livelihood, and of cultural values that sustain life and gave it meanings in these islands, will form the central focus of the museum. The inclusion of these narratives will help actualize the principle of co curatorship by forming the basis of museum design, collection, and display. The limitless reserve of these narratives will help the museum grow and sustain the continuing indigenous cultures of these islands. एक ही साथ दिखा देने से ये पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है, कौन सा जो वस्तु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में। तो आप एक तरफा आप देख सकते हैं कि साइड में करा हुआ है चौरा के रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि निकोबार एक लेडी है, लेके जा रही है साथ में, और पीछे में उसका बैलेंस रखने के लिए लकड़ी रखते हैं। तो इसमें ये संबंधित होता है कि एक लेडी का काम है गृहस्थी से और दूसरे अपने बच्चों से, और उसके बाद अपना कस्टम यानी कि आपकी संस्कृति से संबंधित है, और साथ में उसका हस्बैंड, और साथ में हस्बैंड लेके जा रहा है पिक। तो इसमें ये एकदम होल ये प्रेजेंटेशन करता है कि हाउ टू यू सर्वाइव। हाँ, ये हमारे कल्चर है और ये हमारे रिप्रेजेंट है कि हम लोग कैसे थे, अब कैसे हैं, अब कैसे होने वाले हैं। अब कैसे होने वाले हैं तो हमारे हाथ पे नहीं है, हमारे बच्चे के हाथ है। For Totanage and Tai from the Onge settlement at Dugong Creek in Little Andaman, the museum idea is less clear. What they are certain about, however, is that there are myths that need to be passed on to the future generations if the community was to be kept alive. Among all the legends Tai and Totanagi grew up with, it is the legend of the war and rocks that best embodied the continuity of Onge life and memory.
Etote kwata etiku itakuwa Quran lemba itakuwa tote Quran kwa lemba eti shogu etike tambo choge lemba eti choge kato oto kuremba wen ale eti ye kan kate bu kemba eti toti bene te tuwe wa ma eti ta eti ye kwale wa ale ni me makama choge ke Wetinga ti vole mai irengi kinya na kwa ngitu kabiki eti kwa ti vole mai nga ti jala ke ti vole mai gi ti jamba tena kwa lengana ageli ga te cheno kwa to kwa le agi ti ga ka pa Tuone tu keba. ya kaka lua kana iga ore one pada keba ti one ke wa amba ta kwa cheno kwa da one ke wa Google ya Wegele wegedi tariga yi jato mbagi alega tambole tabi tiki ambai di to da pe ta da ba do yi ba taji te ka titi ga ba The old images bring back memories of times long past. For Tai and Totanage, the young Onge seem to have become oblivious to what was irrevocably lost. sini nomor alu ke bini अच्छा और नारा टकांग में भी नहीं है उधर नारा टकवांगे नहीं है तो टांगे बनाने का जरूरत नहीं है उधर तमन्वा नहीं है तो टाना गेरू के लिए कुछ बनाने का जरूरत नहीं है तो दांगी बनाता है लोग जंगल समुद्र जाता मिशन घूमते तो उधर तो छोटा है They are saying, what do we do? If I make the boat, there is no turtle to go hunt. If I make the arrows to even hunt the pig, there are no pigs to hunt. So there is only chicken left in the area to eat. That's all. Far away from Dugong Creek and deep in the forests of the South and Middle Andaman are another community, the Jarawas, for whom the experience of the outsider is both recent and raw. They straddle the worlds of the forest and its fringes, finding new things and new meanings to make sense of the rapidly changing world around them. It was in 1998 that the Jarawas of Middle Andaman ended their centuries old self imposed isolation and started contacting the outsiders. The world for the Jarawas has been changing since colonial times when their land and lives were threatened. Thereafter, change came in through processes of contact and welfare by the Indian state, and more radically with the growing relations with settlers who came to live right next to their reserve territory. The Jarawas, with whom the team spoke to, responded variously to these changes, at times lamenting the loss of old ways while at others welcoming new habits of life. Their view of these changing worlds with helicopters and guns were drawn by them on their headbands. Nautilus shells were regularly used as drinking water containers, but Jarawas were sad that these shells were not easy to find anymore. Most of the old items were identified by the Jarawas were interestingly not identified as just things but as objects entangled in memories of loved ones. Toy tapa While most Jarawa elders wanted to keep old, forgotten things in the museum, younger Jarawas suggested we keep a mix of things both old and new. They felt that along with old baskets, honey containers, bows and arrows, plastic bottles and metal pots should also be kept, as in the future Jarawa children might have something different from what they had now. এরা জানে বানাতে ছেলেরা কেউ জানে না বানিয়ে সেই দেখাবে জিনিসটা কি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করে ও জল ক্যারি করার জন্য ওই আচ্ছা। ধরনের একটা জিনিস কিন্তু কি ভালো ডিসক্রিপশন ওরা বোঝেনি হ্যাঁ ওই জলটা যখন যায় না ভিতরে ওই যে যাবে, হাওয়া হ্যাঁ, আবার বেরোই আছে কালকে ওরা বললো বটল রাখা উচিত আজকেও বলছে এটা বানানো উচিত क्यों दिक्कत का है यो बड़े पड़ा होने का पर में भूल जाएगा तो वो लोग देखेंगे यह बूझ जाएगा पढ़ा याद करेगा याद हम करेंगे लोग पैसा में हो जाएगा ना उस टाइम में अच्छा अच्छा क्या याद देखेगा याद तो मैंने जब रखेगा आऊँगा तब हम देंगे Unlike the Onges and the Jaravas, for whom the idea of the museum is still hard to fathom, the great Andamanis have a keener sense of the museum's value as a link to its past.
For them, the past lives on as much as in museums as it does in monuments and memorials. ना बाप दादा की थी का डेथ हो गया लड़ाई में। लड़ाई तो ब्रिटिश का साथ भी हुआ, 5,000 आदमी एक करके लड़ाई में मारा गया। The Great Andamanis, who like the Nicobaris have had a longer relation with the outsiders, expressed a deep sensitivity to the value of a museum for the children who seem to have moved further and further away from their cultural roots. We spoke to three generations of a Great Andamanis family, and what we heard were voices that expressed anxiety about a past that was lost and a deep sense of anguish that not many would be inclined to retrieve it. पहले से ही होशियार था, वो सीख सकता था, लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं। कुछ भी नहीं है अभी। अब पिछला महीना इसका रोजा तोड़ा, तब कुछ फंक्शन नहीं मनाए हम लोग। ऐसी जो है तस्वीरें करके दे दी है। जो आदमी एक जगह में नहीं है, सब बाहर है ड्यूटी में, क्या कर सकते हैं? Heli achur me be atire nele bete po nutha choy tel launa ranyo achai ku ata min nutha choy tel tone gira me po nutha binu mi kuje क्या ये हो सकता है कि म्यूजियम, नया म्यूजियम में अगर हम ये पुरानी चीज दिखाएं और ऐसा बनाएं, हम लोग के जो नए नए जो बच्चे हैं ग्रेट अंडमानीज, वो लोग भी देख के सोचेंगे कि ऐसा बनाया जा सके। कोई चीज तो होता अगर बच्चा लोग बनाने वाला को फ्री छोड़ देगा, खाने पीने बंद कर देगा, ये लड़का लोग खुद करेगा, देखने आएगा, देखेगा, सीखेगा। Yet there seemed to be an implicit dialogue going on between young and old about what to cherish from history and what to aspire for the future. For the new generation of great Andamanis, now schooled in the disciplines of modern education, there seemed to be the feeling that there was a need to remember and value the richness of their cultural past, even if it was hard for them to find the right meanings of it now. एंजलिन शर्मा, मैं क्लास 2 की पढ़ता हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी। My aim is to become a businessman. मैं बड़ा होकर स्पोर्ट्स बटन बनूंगा। आगे लिखूंगा जो बेसरगम ये दोस्त है, बोले बाबा होता तो तारा चाँद तो पार दे। किस चीज के बारे में है ये गाना? Sir, our parents know, sir, right? You don't know. It is these voices that the Antri Museum proposes to retrieve, record, and share. It seeks to strengthen the islanders' attempts to urge the world outside to hear them. It hopes to be a place where the world in turn is eager to come and engage with them on new terms of equality